Assalamu alaikum. How are you all? I hope you all are doing great and you all have enjoyed the vacations and Eid. Congratulations, my dear students. You have promoted to the new classes. I welcome you in the new class. Let's start the new session with the prayer that Allah Almighty keep us all safe and healthy and we rejoin our school with the best of health and spirits. So this is your English class and I am your teacher, Foqiya Kanwal. So are you ready for the lesson? Guess the topic, what we are going to read today. It's really very interesting and it's a very refreshing start. Yes, we are going to read a poem. So at the end of the lesson, we will be able to read the poem with proper rhythm, pronunciation, and intonation. We will be able to understand the thought and imagination contained in the poem, and it must enhance your vocabulary. You will enhance your vocabulary by understanding the meaning of new words. Okay, can you see the scene on the screen below? Yes, it's a dark night and it must be looking wintry season. Okay, guess the title of the poem. Any guesses? Yes, title of the poem is Stopping by the Woods on a Snowy Evening. The poem is written by Robert Frost. Robert Frost is a American poet and he has written the poetry related to nature. Today we are going to enjoy the poem. It's one of the best poem in the English literature. I hope you will enjoy the poem and you have to listen it carefully. Okay, you have to listen it carefully. At the end of the lesson, I am going to ask questions from you. Are you ready? Let's get started. I am going to read the stanza by stanza and also explain the meanings. First stanza, whose woods these are? I think I know. His house is in the village though. He will not see me stopping here to watch his woods fill up with snow. Whose woods are these? The poet is saying. किसकी woods हैं? Woods क्या होता है? Trees and the other plants in the large wooden area. Trees and other plants in the large wooden area. किसी ज़्यादा सारी एरिया में trees and plants, in other words you can say it a jungle. So the poet is saying whose woods these are. वो कहते हैं किसकी woods हैं ये? I think, मुझे लगता है कि शायद मुझे पता है. जो उसका ऑनर है वो कह रहा है his house is in the village though. मुझे लगता है उसका house जो है वो village में है. I know you all know the meaning of village, but I am here explain it again. A community of people smaller than a town. Cities से छोटे होते हैं. तो पोइट कह रहा है कि जो उसका हाउस है वो विलेज में है. ही विल नॉट सी मी स्टॉपिंग हियर. उसे नजर नहीं आएगा आ रहा कि मैं यहाँ पे रुक रहा हूँ टू वॉच हिज वुड्स. उसकी वुड्स को देख रहा हूँ फिल अप विद स्नो, जो स्नो से भरी हुई है, जिस पे बर्फबारी हो रही है. तो कहते हैं कि वो विलेज में है और एक्चुअली वांट टू से कि वो नेचर से डिसकनेक्टेड है और मैं उसकी वुड्स में हूँ और मैं उसकी स्नो से फिल हुई हुई वुड्स को देख रहा हूँ और एंजॉय कर रहा हूँ और उसे नज़र नहीं आ रहा कि मैं यहाँ पे रुका हुआ हूँ. नेक्स्ट स्टेंजा, सेकंड स्टेंजा. My little horse must think it queer to stop without a farmhouse near, between the woods and frozen lake, the darkest evening of the year. अब पोइट क्या कह रहा है? माई हॉर्स मस्ट थिंक इट क्वेयर. कहता है मेरे हॉर्स को लग रहा है कि बहुत अजीब है. क्वेयर मीन वियर्ड, वेरी ऑड, डिफरेंट. तो उसको लग रहा है कि इट्स वेरी वियर्ड टू स्टॉप विदाउट अ फार्म हाउस नियर. के यहाँ पे क्यों रुका है? यहाँ इर्द गिर्द कोई फार्म हाउस नहीं है. बिटवीन द वुड्स एंड फ्रोजन लेक, तो कि वो वुड्स और फ्रोजन लेक, फ्रोजन जमा हुआ, कि वुड्स और फ्रोजन लेक के दरमियान में कि बगैर किसी फार्म हाउस नियर नहीं है, तो ये क्यों रुका हुआ है? द डार्केस्ट इवनिंग ऑफ द ईयर. अब वो थोड़ा सा सीन को और ग्लूमी कर रहा है. द डार्केस्ट इवनिंग ऑफ द ईयर है, बहुत डार्क नाइट है
और वुड्स और फ्रोजन लेक के दरमियान में कोई फार्म हाउस नियर नहीं है, यहाँ पे रुकने की कोई जगह नहीं है, स्टे करने की जगह नहीं है। तो वो उसका जो हॉर्स है, द पोइट इज कनेक्टिंग विद हिज हॉर्स, उसको उस जिस तरह वो नेचर से क्लोज है, इसी तरह उसको नेचर को एंजॉय करे, तो वो हॉर्स जो है वो भी नेचर को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो अपने हॉर्स से भी उसी तरह ही उसकी फीलिंग्स को अंडरस्टैंड कर रहा है। वो कहता है मेरा हॉर्स जो है वो भी हैरान हो रहा है कि वो फार्म हाउस के पास ना होने के बावजूद भी वो यहाँ पे पोइट क्यों रुका हुआ है। नाउ द थर्ड स्टैंजा, ही गिव्स हिज हार्नेस बेल अ शेक, वो अपनी हार्नेस बेल्स को शेक देते हैं। हार्नेस बेल्स क्या होता है? हार्नेस बेल्स ये होती हैं हार्नेस, द लेदर स्ट्रैप एंड बेल यूज टू कंट्रोल द हॉर्स, जो ये आपको नजर आ रही हैं, जो हॉर्स को कंट्रोल करने के लिए लेदर बेल्ट यूज होती है, इसको हार्नेस कहते हैं। अब वो हार्नेस बेल्स को शेक कर रहा है, हिला रहा है, टू आस्क इफ देयर इज सम मिस्टेक, क्योंकि मिस्टेक तो नहीं हो गई। द ओनली अदर साउंड द स्वीप ऑफ इजी विंड एंड डाउनी फ्लेक, तो और जो साउंड हमें सिर्फ नजर आ रही है वहां पे, वो किस चीज की नजर आ रही है? डाउनी फ्लेक और इजी विंड। डाउनी फ्लेक मतलब बर्फ के छोटे छोटे ड्रॉप्स जो गिर रहे हैं, सॉफ्ट फेदरी स्मॉल पीसेस ऑफ स्नो फॉलिंग फ्रॉम द स्काई। तो वहां पे हॉर्स की जो हार्नेस बेल्स के अलावा साउंड है वो किस चीज की है? इजी विंड एंड डाउनी फ्लेक। इतनी खामोशी है वहां पे, इतना सुकून है, और उसका हॉर्स जो है वो हैरान हो रहा है, उस ड्रोइड से पूछ रहा है मिस्टेक तो नहीं हो गई। The poet says in the fourth stanza, the woods are lovely, dark and deep. Lovely, very appealing to your eyes, to your senses, to emotions as well. Lovely, dark and deep. अब इस लाइन में पोइट ने 3 एडजेक्टिव्स यूज किए हैं, लवली, डार्क एंड डीप, टू मेक इट सो रिच इन सेंसेस। आप इमेजिन कर सकते हैं कि वर्ड्स कितनी खूबसूरत होंगी। वर्ड्स आर लवली, डार्क एंड डीप, बहुत खूबसूरत हैं, बहुत सुकून है। बट आई हैव प्रोमिसेस टू कीप, लेकिन पोइट कहता है आई हैव अ प्रोमिसेस टू कीप, मेरे पास बहुत सारी कमिटमेंट्स हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं जिसे मैंने पूरा करना है। एंड माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप, और बहुत दूर जाना है बिफोर आई स्लीप। स्लीप यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है डेथ को। एंड माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप, द पोएट इज सेइंग कि डेथ से पहले, मरने से पहले मेरे पास बहुत सारे काम हैं और मैं यहाँ नहीं रुक सकता। मतलब दुनिया की ज़िंदगी में हमें बहुत सारी चीज़ें बहुत अट्रैक्टिव लगती हैं, हम बहुत वो काम करना चाहते हैं, बट वी हैव सो मच कमिटमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ कि हम उसे नहीं कर सकते। हम अपनी कमिटमेंट्स पूरी करते रहते हैं बिकॉज वी हैव नो टाइम, द लाइफ इज़ वेरी शॉर्ट। So he has repeated the lines, the miles to go before I sleep and miles to go before. He really wants to say, but he is saying that I have so much to do that I can't stay here. So this is our poem. I'm going to read the poem, the full poem again, and you have to read it with me. Whose words these are? I think I know. His house is in the village though. He will not see me stopping here to watch his woods fill up with snow. My little horse must think it's queer to stop without a farmhouse near, between the woods and frozen lake, the darkest evening of the year. He gives his harness bells a shake to ask if there is some mistake. The only other sounds the sweep of easy wind and downy flake. The woods are lovely, dark, and deep, but I have promises to keep, and miles to go before I sleep, and miles to go before I sleep. Now we have some pronunciation practice. Queer. You must repeat it after me. Queer. This word is queer. Next, farmhouse. It's a farmhouse, not a farmhouse. It's a farmhouse. Next is easy wind. Easy wind. Harness. It's harness. Sweep. Sweep. Downy flake. Downy flake. Okay, students, it's now
quiz time. I have questions for you. I hope you have listened the poem very carefully. Now you have to answer the questions. Are you ready? Okay, first question is, why does the poet stop by the woods? क्यों रुका था वो woods के पास? Number one option is to see the woods fill up with snow. Number two is to see the fire burning. Number three, to hear the harness bells, or D, to see the stars twinkling. Yes, guess the answer. Why does the poet stop by the woods? Yes, to see the woods full up with snow. Next question is, what must think it's queer to stop? किसको लग रहा था कि रुकना जो है बहुत अजीब है? Little dog को, a little fox, a little cat, or a little horse? किसको ये लग रहा था? A little horse. Correct answer. Next is, what is not near? The house, the farmhouse, the village, or the road? क्या चीज जो थी वो नियर नहीं थी? फार्म हाउस. जिसमें हॉर्स हैरान हो रहा था कि ये क्यों रुका है पोइट. नेक्स्ट, व्हाट इज द मिसिंग वर्ड between the dash and frozen lake? Village, wood, road, या creek? Yes, between the woods and frozen lake. Is this line correct? The coldest evening of the year? Think. Is it correct? No. Is it not? The darkest evening of the year. Who and what gives his harness bells a shake? किसने अपनी harness bells को shake किया था? Little mule ने, little cow ने, little pony ने या little horse ने? Guess the top answer. Yes, it's a little horse. Next, we have, why does he give his harness bells a shake? उसने क्यों shake किया था? To ask if there is some mistake, to see the glittering bells, to hear the sound echoing in the woods, to hear the glittering bells. What is the answer? To ask if there is some mistake. There is no other sound but the harness bells. Is it true or false? No, it's false. There is sound of easy wind and snowy flakes. Yes, the poet can't stay in the woods because he has promises to keep. Is it right? Is it true? Yes, it's true. Next is, what other reason can't the poet stay in the woods for? Because he still has miles to go, because he is getting cold, because his little horse is getting impatient, because he is tired of waiting in the woods. Guess the answer. Yes, because he still has miles to go. Okay, students, now we have homework time. You have to write the central idea of the poem. आपने अपनी wording में just 2-3 lines का central idea लिखना है अपनी wording में, और आपने अपनी टीचर को send करना है कि आपने इस poem में क्या पढ़ा है. Just 2-3 lines, central idea just in 2-3 lines, okay? And you have to learn the dictation of difficult words. Okay, students, have a good day. Thank you. Allah Hafiz.